Can non-tech become a data analytics, or can someone from the BCom or BA background can be a data analytics? So, hey, welcome back to my channel. My name is Preeti Yadav and I am data analytics working experience with 3.5 years. I have received many queries related to data analytics. Some of them are related to like, hey ma'am, I am from BA background or BCom background. How can I become a data analytics? Is it possible to get a job being a part of BCom or BA and then be a data analytics? So the answer is yes, you can be a data analytics. But here question is how? कैसे बने data analytics? So my response is I have over 3.5 years of experience in data analytics, and throughout my journey, my jobs and my different companies, I met with many people who are not from the tech background. So this video is basically for those who wants to become a data analytics, वो जिसके लिए जो जिनके backgrounds non tech से हैं but वो data analytics बनना चाहते हैं. So I'll give you tips and I'll give you the live experience I have been through with the non tech backgrounds people. So first part is why data analytics suitable for non tech background. So see, basically data analytics is not all about coding. It's about the problem solving techniques. So someone who is from the non tech background, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कभी कभी काफ़ी बहुत अच्छी होती है एंड दे हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग बिजनेस डिसीजंस. लाइक उनको बिजनेस समझ में आता है कि उन्हें कैसे कॉस्ट बचाना है, कैसे टाइम इंप्रूव करना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है. सो दिस इज द बेसिक लाइक ऑफ द डेटा एनालिटिक्स. क्योंकि आप जिस डेटा पे काम करते हो उसकी कोई वैल्यू होती है तो वो इस फॉर्म में होती है, कॉस्ट एंड टाइम मैनेज. सेकेंड इज बिजनेस थिंकिंग इज मोर देन कोडिंग. सो यस, tech backgrounds people can write the scripts, can solve the coding problem, but non-tech backgrounds are essentials for solving business. Tech backgrounds persons can solve the query, but non-tech background persons can solve the business problem. If you're coming from a non-tech background like HR, marketing or business, so आपकी domain knowledge, finance, आपकी domain knowledge already improve हो चुकी है. So आपको rather आपके एक understanding है domain में तो आपको coding लिखने में भी problem होगी even if there are some amounts of coding. Communication is a key. So usually it's not depend on the tech or non-tech person. Sometimes tech peoples are not at a good communication skills, but you meet art peoples who are from the English subjects, and you get a very good English from their side. And if someone's from the finance backgrounds, they can use their domain terms in English. They can understand it very well, because ultimately when it comes to communicate and when it comes to communicate with the client or business holders, so वहाँ पे आपकी communication skills बहुत ज़्यादा काम आती है, and communication skills with the domain knowledge वो बहुत ज़्यादा impact करती है. They focus like business stakeholder focus on the conclusions. अगर आप business को अच्छी तरह से deliver कर पा रहे हो, like समझा पा रहे हो with the words, with the communication, so ये ज़्यादा impact करता है. Fourth is your degree matters, but not more than certifications. So yes, if you are from non-tech backgrounds, you can do some certifications, Google Analytics or Microsoft Analytics. You can have some certifications like PL300. Likewise, many certifications are there. I'll talk about this later. But if you don't have a degree in tech backgrounds, but you have a certifications in tech things like data analytics, so you can and you are able to explain your part in the interviews, and definitely आपने आधे तो ऐसे ही क्रॉस कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मैंने बहुत लोगों से मिला है, मैं अपनी जॉब में बहुत लोगों से मिली हूँ. सो इन रिसेंटली इन माई टीम वन ऑफ द पर्सन इज फ्रॉम द बीकॉम बैकग्राउंड एंड ही इज ऑटोमेशन लीड. इमेजिन ही इज ऑटोमेशन लीड. सो यस, you if he can do, you also can do. Before moving forward, please do like, and subscribe, because that gets me motivated to make more video. Because last time when I made a video on the layoff, and there I got many loves from you guys, so please do this time as well if you like this video. Fifth is fifth point is like there is a multiple entry path. It's not about data analytics only. Analytics can be in HR analytics, finance analytics or बिजनेस एनालिटिक्स. सो यहाँ पे आपकी अगर डोमेन के अकॉर्डिंग कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप इसमें जा सकते हो, आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो इनिशियल बेसिस पे. लाइक इफ यू आर फ्रॉम HR एंड यू अंडरस्टैंड द HR टीम, सो यू गो विद HR एनालिटिक्स टीम. एंड इफ यू आर फ्रॉम फाइनेंस, गो विद द फाइनेंस एनालिटिक्स टीम्स, एंड वो इक्विवेलेंट होती है डेटा एनालिटिक्स की. दिस इज द लाइक पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स ओनली. Sixth important key is consistency is key. I have seen a difference between tech and non-tech backgrounds people. Some tech backgrounds people are not so hardworking, but non-tech persons are very hardworking, I found.
बिकॉज उनको आगे बढ़ना होता है, उन्हें इम्प्रूव करना होता है। एंड देन यू सी लाइक, और एक बार नॉन टेक बैकग्राउंड्स को एक एंट्री मिल जाती है, एंट्री मिलने से पहले भी वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, एक बार उन्हें चांस मिल जाती है, दे लाइक दे स्टार्ट फ्लाइंग, एंड वो इतना वर्क करते हैं वहाँ पे, इतना हार्ड वर्क करते हैं रियल टाइम में कि फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम लाइक इतनी डोमेन नॉलेज, इतनी टेक्निकल नॉलेज भी वो वहाँ पे गेन कर लेते हैं। सो दे आई फाउंड दे आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन इन अ टीम्स इवन। सो लाइक इफ यू नो नथिंग नाउ, ऐसा होता है हमेशा कि इफ यू नो नथिंग नाउ एंड यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड आप रियल टाइम में एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो रैदर देन आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे आलस कर सकते हो। And now it's come about the SQL parts. Many queries I have to get, like if I don't know what about queries and language like coding, if I don't know SQL, do I have to learn SQL? See, उसके बारे में बाद में आऊँगी. Of course you have to learn SQL, but for the initial things, it's not necessary to go with SQL directly. You can learn from the Excel automations things, and जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्क्रिप्टिंग्स, एक बेसिक नॉलेज फ्लो आपको जनरेट करना होता है, and that's it. बाद में आप SQL भी सीख सकते हो, which is important क्योंकि आगे भी बढ़ना है तो. So at last it's come. Am I ready to go? Am I ready to apply? So many people get doubt, like when I am ready and should I go to apply? When should I go to apply things? So if you have a query related to these things, like, or if you have a query related to resume scannings or the tech things, or you want some approach how to follow technical paths, like from which section I should learn first and the second and the third and so on. So you can directly ping me, you can fill the forms, I'll revert to you, and if not you can also mail to me, for if I get a time I'll revert back to you.